अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव नॉन फिक्शन की, एंड इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द नेम सेज, इट्स डिस्क्रिप्टिव, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन एंड नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या? यानी कि इट्स बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, on the truth, on real things, and it has no imagination in it, and it is, however, very very descriptive, यानी कि details बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो अगर हम इसकी explanation देखते हैं, descriptive non-fiction employs all five senses to help the reader get a visual of what the writer is trying to describe। यानी कि हम हमारी जो सारे senses है उनको इवोक करके हम इतनी ज़्यादा डिटेल में एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों को उसकी एक इमेजरी नज़र आ जाती है, पता चलना शुरू हो जाता है कि ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट टू डिस्क्राइब अ डायनासोर, सो वी विल डिस्क्राइब द हाइट, द वेट, द काइंड ऑफ स्किन, द कलर, द पर्सनैलिटी, द अग्रेशन, द फॉर्म, हाउ ओल्ड इट वॉज, हाउ young it was, if it's a newborn dinosaur, if it's a very old dinosaur। मगर आप तस्वीर खींचते चले जाते हैं कि जी उसकी दो टांगें होती हैं, हाथ जो हैं वो छोटे होते हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं। तो इतनी डिस्क्रिप्शन देते चले जाते हैं कि बंदा जो है वो अपने दिमाग में एक तस्वीर खींच लेता है, चाहे वो पढ़ रहा हो चाहे वो उस चीज़ को देख रहा हो। जब उसको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, वो डिटेल्स मिल जाती हैं, एक चीज़ का उसके दिमाग में हमेशा ख्याल होता है दैट वॉट एवर इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड देयर इज़ ट्रूथ टू इट, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी टू इट, इट्स नॉट फिक्शनल, इट्स नॉट मेड अप, इट इज़ रियल। So even though you're describing in details, you're describing realistic details to the point. You can even talk about the eyelashes, you can talk about how long the hair was, you can talk about the color of the hair, the texture of the hair, the smell of the hair. Some people might want to talk about the taste of the food. So you're evoking all the senses and describing actual factual things in such detail that it becomes a description. ये ज़रा से long writings होती हैं, ये लंबे लंबे तरीके से लिखी जाती हैं, they're not very concise because you are putting in so much of detail in them. So description writing creates images in the reader's mind by using language that appeals to the senses. When we talk about the taste, it was tangy, it was bitter, it was sweet. Or if we're talking about smell, it was this foul smell, it was a beautiful smell. Or if you're talking about touch, it was hard to touch, it was rough to touch, it was smooth to touch. So these are how ways that you can evoke the senses. The words that you are using are ones that actually appeal to the senses. आप उसको relate कर सकते हैं अपने किसी न किसी एक sense के साथ, तब जाके वो description बनती है, वो एक 3D life form लेना शुरू हो जाता है। Even though it's written word, you can suddenly start making it alive. So I will read out an excerpt for you of a descriptive form. This is: closer to the center of town, a few dusty trees break the linear blackness. Then on a boulevard divided in the middle by a row of trees that meet overhead with trees on either curb to form two leafy tunnels, the traffic begins to swirl, dragging you mercilessly on, past a park, into the unfinished glass and chrome and concrete world of the city. Modest skyscrapers act as bookends for the lower structures, furniture showrooms, and stores of electronic equipment. Vast windowless walls of concrete, some studded, some quilted for texture, loom over garages, amusement arcades, record shops, restaurants, and potbelly trucks dribbling their pre-mixed concrete near the hoardings of a would-be skyscraper. At the end of a short street, drab with two-story buildings, rooming houses, and dejected shops, squats a miniature station, its newly gingerbread eyebrows giving it a sullen expression.
half deviant, half apologetic, a remnant of the past. It looks out on the wrong century. So it's describing a building, but it's describing it in such detail that it's beautiful and you can understand each and every element of the whole environment. So it becomes a descriptive non-fiction. So some of the tips that I would like to share with you for writing descriptive non-fiction are focus on diction and detail. लफ्ज़ों पे और डिटेल पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है. आप ऑब्ज़र्व करें, जो आप देख रहे हैं एक एक एलिमेंट उसका लिखें. जिस तरह के हमने पहले पढ़ा, उसने बात की कि एक सड़क जो है वो दोनों तरफ से दरख्तों से ढकी हुई है और उसको उसने जिस तरह ऑब्ज़र्व किया और डिस्क्राइब किया वो हमारे जहन में भी उतर आया. सो यू हैव टू ऑब्ज़र्व बिफोर यू कैन डिस्क्राइब. राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट फ्रीली. आराम से लिखें, बग़ैर डर खौफ के पहला ड्राफ्ट लिखते चले जाएं. जो डिटेल आपके जहन में आ रही है, जो डिस्क्रिप्शन आपके जहन में आ रही है, आप लिखते चले जाएं ताकि यू कैन कैप्चर एवरीथिंग दैट्स इन योर माइंड. मेक ईच वर्ब, ख़ास तौर पे वर्ब मोर देन नाउन, मेक ईच वर्ब अ प्रिसाइज इवोकेटिव एक्शन वर्ब, जिससे कोई एक्शन जो है ना वो डिनोट हो रहा हो, क्योंकि उसी से मूवमेंट आती है आपके स्टोरी लाइन में, उसी से मूवमेंट आती है आपके जहन में. तो आप ना एक जगह स्टैटिक नहीं रहते हैं, आप हिलना शुरू हो जाते हैं, उस कहानी के अंदर हिलना शुरू हो जाते हैं. चूज़ ओनली क्वालिटी एडजेक्टिव्स, यानी कि जो हमारे जेनेरिक एडजेक्टिव्स होते हैं ना, गुड, प्रिटी, इंटरेस्टिंग, इससे हट के ऐसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कीजिए जो एक्चुअली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में, तो वो वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ क्वालिटी एडजेक्टिव्स. Evaluate what you're writing, revise what you're writing. आपने एक दफ़ा लिख दिया, आपने रख दिया, उसको दोबारा पढ़ा और evaluate किया, इसमें is there enough description in it? Is there enough detail in there that the person is going to be excited about what they're reading? And then you revise it accordingly. The final copy has to be something that really evokes all your senses, describes something in detail, but don't forget, it is real, it is fact, it is not fiction, it is non-fiction. That is why it becomes descriptive non-fiction. Thank you.